Hello friends, how are you all? I'm sure you must be doing well, you must be healthy and you must be charged up for your preparation. दोस्तों CLAT 2021 के नोटिफिकेशन आ चुके हैं and I'm sure आप सब लोग बिल्कुल मेहनत में लग चुके होंगे and I'm sure you are aware that our series of videos have also started. So here in this video, I'm going to discuss about how to prepare for logical reasoning. Yes or no? So logical reasoning is very important. I have covered two modules. One is on legal reasoning, other is on English. Okay. Whatever I have covered in legal and reading comprehension, that will be also applicable for, you can say, this logical reasoning. But let me tell you in detail about this particular part: how to prepare, what to expect, what are the important changes, okay, what should be our action plan. This is very crucial. Okay, let's start to talk about it. First and foremost, we will spend 5 to 10 minutes trying to decipher, trying to decode this entire idea what is presented by CLAT 2021 consortium. Okay, so consortium of NLU have mentioned that logical reasoning in UG CLAT 2021 will include series of short passages about 300 words each. Okay, so this is about 300. So there were some of 400 words, there were few of 250 words, but this is very important, paragraph based. Each passage will be followed by one or more questions that will require you to do these 5 things. If you understand these 5 things, believe me, it is a good idea for you to identify what should I prepare. Okay. Many times, a lot of us believe that we need some material, someone will give us material and we will follow it and that is done. My dear students, that is not the good idea. A good student will actually question whatever the content he possesses. Yes, this is very crucial, and thereby we can say you need to know कि भैया क्या पूछा जाएगा, what is expected out of me. If I know that what is expected out of me, I can actually question whatever the content I am getting. Yes or no? Great. Let's start with the first point. 1. You must be in a position to recognize an argument, its premises and a conclusion. Very important. दोस्तों, an argument comprises of, you can say, premise, okay, and then there are conclusion. Yes or no? दोस्तों, what are the premises? Premises are facts, are those statements, ठीक है, which are considered to be true for a given scenario. Then there is some relationship between these premises and a conclusion. Conclusion is the inference we need to reach to. Conclusion is the inference we need to reach to. ठीक है, so that is generally hence, therefore, ठीक है, since वहां से चालू होता है, ठीक है, as, ठीक है, ओके. सो ये जो you can say conclusion होता है वो कहीं पे भी हो सकता है. It may, you can say, start the paragraph and then the premises are provided, or it may come at the end, or it may be in the middle, but we should know what is premise. Yes or no? This is very crucial. And दोस्तों, premise are also sort of conditions, are also sort of facts जिसके ऊपर सब कुछ dependent होता है. If I tell you, let's say, for example, let's say Tata Nano car is cheaper, it is safe, okay, it has low maintenance, and therefore you should purchase this Tata Nano car. Okay, so when I say therefore you should purchase, so whatever is my recommendation, my prediction, my suggestions, all of them will be turning to be a conclusion. Yes or no? While the initial points which I mentioned, that it is cheaper, it has a good maintenance, that is, it has low maintenance, and it is a safe car. Okay, so these are premises. Okay, now the point is whether my conclusion is a strong conclusion or not is very crucial. Look, that there are two kind of things to be understood. Either conclusion is valid or it is a strong conclusion. Okay, validity of conclusion goes by deductive
reasoning. Okay, so when you are working on deductive reasoning, you have a validity of a conclusion. When you are working with inductive reasoning, okay, then it is all about strong conclusion. Okay, so what happens in this entire idea, you can say we are going to do overlapping of things. Yes or no? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये विचार को पूरा आत्मसात किए बगैर, ठीक है, यू सिंपली जंप ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है. सो प्रॉब्लम ये होता है कि फिर हमारा परफॉर्मेंस ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है. Yes or no? When our performance is ऊपर नीचे, we don't know whether we have practiced it well or not. So दोस्तों ये concept सीखना जरूरी है. Yes or no? Another point, read and identify arguments set out in a passage, in a big passage. ठीक है दोस्तों, when I give you a small, you can say sentence, it turns out to be easy for you to identify what is the premise, what is the conclusion. It is easy, but when it comes to a bigger paragraph, ठीक है, it is the, you can say, alertness of yours, the focus of yours will help you to identify that what is the main argument. ठीक है, many times you must be facing lot of challenges in your mock test, you can say working on this issue कि मैं मुझे पता ही नहीं चलता है कि exactly argument क्या है, what is the main argument of the paragraph. दोस्तों ये जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो आइडेंटिफाई करने के लिए यू रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, बट उससे कहीं गुना ज्यादा यू रिक्वायर अ राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर लॉजिक पार्ट ऑफ इट. ठीक है, किस तरीके से ये आइडिया डेवलप होता है. ठीक है, वो एक एक सेंटेंस प्रीवियस सेंटेंस के साथ या आगे वाले सेंटेंस के साथ कनेक्टेड होता है, एंड हाउ ऑथर यू कैन से फोकसेस ऑन वेरियस थिंग्स. सो बेसिकली व्हेनेवर देयर आर ट्रांजिशन वर्ड्स प्रोवाइडेड, दोस्तों ये चीज के ऊपर ध्यान देना, ट्रांजिशन वर्ड्स, मेनी ऑफ अस आर नॉट बॉदर्ड अबाउट ट्रांजिशन वर्ड्स. आई बिलीव द गेम इज देयर विद द ट्रांजिशन वर्ड्स. ओके, मेक श्योर यू हैव अ फोकस ऑन इट. ठीक है, सिमिलरली critically analyze pattern of reasoning, assess how conclusions may depend on a particular premises or evidence. So it is the pattern of reasoning. There are many varieties of the patterns available. There are analogical argument, okay, there are fungibility of idea, there are, you can say, some argument based on some sample, okay, or that is you focus on sample and you give answer to generalized point. Yes or no? So दोस्तों we need to analyze varieties of the patterns of this argument or reasoning. Okay, now this requires lot of, you can say, close reading, lot of understanding, ठीक है, questioning a lot, and here you may be going very slow. My dear students, do not be in a hurry when you are doing LR. Okay, don't think that I will do 500 questions और मेरा काम हो जाएगा. अरे भैया तुम 1000 questions कर लो तो भी काम नहीं होगा, because you have not analyzed right pattern. Yes or no? This is very crucial. Infer what follows from the passage and apply this inferences in the new situation, which is very crucial. Yes or no? कि हमें कोई आर्ग्यूमेंट देके रखी है, उस आर्ग्यूमेंट का इन्फरेंस कुछ आया. ओके, सिमिलर काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट विल बी अवेलेबल इन अ डिफरेंट सिचुएशन. ठीक है, एंड वी हैव टू इन्फर फ्रॉम इट. यस और नो? आई थिंक दिस इज प्रीटी क्लियर टू यू. Yes, so for example, we know how COVID-19 is spreading. It is human to human, it is spreading. Okay, while the new avian bird flu or avian flu or a bird flu is not generally flowing from human to human, but it is from bird to human. So there is some, you can say, parameter got changed in terms of transmission. Yes or no? And then if the questions are provided, you should be in a position to identify that which parameter got changed and how it is affecting. My dear students, I'm sure you understand a lawyer will have to, you can say, develop this understanding. Inference, that is case ka decision on, let's say, one particular fact, can we take that judgment as a precedence for our future cases? Yes or no? This is very crucial. Yes or no? For example, in a recent Salamat Ansari case, you can say Allahabad High Court said that the people have a freedom of choice to have a life partner.
ठीक है. Now this freedom of choice of life partner is a fundamental right. Can it be applicable to the, you can say, having some lengthy relationship, that is homosexual relationship, that means same sex marriages? Can it be allowed? Now this is very interesting. Yes or no? Because in the judgments, ठीक है, whatever the Allahabad High Court mentioned, ठीक है, it is freedom of choice of a life partner. ठीक है. Now here freedom of choice of life partner is a very broad term. Can we infer that it is applicable in this scenario, that is, you can say, the same sex marriage? In fact, it is applicable. Okay. Draw relationships, analogies, identify contradictions, equivalence, assess the effectiveness of the argument. Now this is very crucial, my dear students. ठीक है. This will take time. शुरुआत में आपको बहुत टाइम लगेगा. ठीक है. तो बेसिकली होगा कैसे कि आपको धीरे धीरे आपका समय कम लगेगा आगे जाकर. ठीक है. एक समय के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, बट शुरुआत में विद एवरी क्वेश्चन यू विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू द ट्यून ऑफ 5 to 7 minutes. And if you are spending 5 to 7 minutes, that's pretty okay. Sir, हमारे पास तो 5 महीने बचे हैं. Should we go for शांति से reading or should we solve more question? My dear students, simple thing. Spend more time understanding the arguments provided in the paragraphs. ठीक है. Initially, it may take more time, but don't worry about it. Don't get disheartened. Don't get frustrated. ठीक है. I know many of the students are getting frustrated when it takes more time, because they always we can say have one parameter, one measurement in their mind कि actual exam में तो इतना you can say समय तो मिलेगा नहीं. तो पर दोस्तों वो एक्चुअल एग्जाम के लिए तो कुछ समय के बाद तैयार होंगे ना. ठीक है. लेट्स से इफ यू आर गोइंग फॉर, लेट्स से वो पावर लिफ्टिंग वाली गेम में आप जाओगे तो पहले दिन से 180 केजी उठा पाओगे? नहीं भैया, वो तो धीरे आप 180 पे पहुंचोगे. Yes or no? I hope you are able to understand my point here. Yes. So my dear students, इन पांचों 5 पॉइंट्स को अपने हाथों से लिखकर अपने टेबल के ऊपर चिपका दो. रोज आते जाते उस चीज को देखो, आइडेंटिफाई करो कि इनमें से मैं कौन से लेवल तक पहुंचा हूं. Whenever you do your LR, ठीक है, check whether you have understood argument, whether you are able to get inference. Can you apply similar, you can say, inference in the similar situation? Can you identify this inference is depend on which premise or which evidence, or what is a problem in the premise, what is a problem in the evidences? Yes or no? For example, the example I gave you, that you can say because of 3 reasons you should purchase, let's say, Tata. Yes or no? ठीक है. Now the weakening of part, ठीक है, the premise is or the inference is entirely based on few things, that is cheaper car, ठीक है, low maintenance and safety. Possibly you may not be interested for that. Yes or no? If I'm suggesting you do that, you may not be interested for that. ठीक है. That is a weakening part. I am making my inference only on this parameter. I did not take your parameter, that luxury car. Yes or no? You wanted SUV. Yes or no? Or you wanted a luxury car, or you wanted a sedan, ठीक है, which I did not consider. Yes or no? ठीक है. So those kind of factors you have to keep in mind. Yes or no? I hope you are able to understand this, my dear students. ठीक है. इन 5 चीजों को अपने आंखों के सामने से 2-2, 3-3, 4-4 बार देखते रहिए. हर वीक में देखते रहिए. That will give you a direction, a sense of direction. So if I talk about what kind of passages came in this CLAT 2020 actual paper, total 5 passages were there, and total they were making 2789 words. Okay, roughly 3000 words, and I believe this may possibly take 25 to 30 minutes. ठीक है. If I take 25 minutes, then still, ठीक है, I am trying to look at it some around 120 to 150 words per minute की speed. My dear students, I have been, you can say, always telling you these numbers with only one reason in mind, that I need to tell you, I need to drill in your mind that you don't need very high speed of 600 words per minute, 500 words per minute. No, ठीक है. You need focus, you need alertness, you need proper comprehension
comprehension of the content. You don't need high speed. I hope you understand this. Yes or no? So topics were COVID-19 and how education have been affected, crisis in news media, anti-alcohol campaign in Soviet Union, CBSE result, and once again COVID-19 down-to-earth.org वाले में से उन्होंने उठाया था कि how that is impacting the ecological aspect. Okay, very interesting points. ठीक है, questions were majorly what is the main idea, and what is the strengthening point, what is the weakening point, ठीक है, what is the premise, those kind of questions were there. Yes or no? The all questions were moving around this 5 points. ठीक है दोस्तों, ये 5 anchor points है. ठीक है, when we make questions at ProTalent, we anchor around this 5 points. Yes or no? This is very crucial. Okay, moving further, we can say what you should work on. Number 1, ठीक है, recognizing argument is sine qua non. If you are not able to identify argument from a paragraph, I strongly suggest read double times, 3 times, 4 times. Try and force your mind to identify it. ठीक है, without recognizing argument, you jump in solving question. It is not going to give you any solution. Whatever the answer you are going to provide, it is purely based on, you can say, some general, you can say, knowledge you possess. Yes or no? It is not connected to the answer based on the math concept. Sorry, that is reasoning concept. मतलब it is like, है ना, मेरे दिमाग में एक मैथ का you can say analogical argument चल रहा था. ठीक है, for example, let's say when you are solving, let's say, math question, ठीक है, and when you don't know the approach, when you know the concept, and when you simply look at the options and you try and apply some random stuff कि भैया जीरो वाला आंसर, फलाना आंसर, ये नहीं चलेगा. So what do? You simply go by luck. Okay, तुक्का, प्योर तुक्का. Yes or no? अब वो तुक्के पे दुनिया चलेगी क्या? जरा भी नहीं चलेगी भैया. Yes or no? So LR में भी हम हमारे कॉमन सेंस के ऊपर आंसर देने की कोशिश करते हैं. दोस्तों, एग्जामिनर is definitely not checking your common sense. Examiner is checking your ability to identify what is logical reasoning. Yes or no? You need alertness in reading. Many times we are not alert while we are reading. We are skipping words. We are simply, we can say, going by some random words. Yes or no? And for us, कि जो जो शब्द दिए हैं, जो ट्रांजिशन वर्ड्स दिए हैं, ठीक है, जिस तरीके से वी कैन से स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट दिया है, फॉर अस दैट इज इमटेरियल. प्लीज डोंट डू दैट. ठीक है, मैं जब शुरुआत में वी कैन से लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी करता था एंड नोबडी टोल्ड मी दिस, आई वाज लाइक यू. ठीक है, मैं भी रैंडम, भाई मुझे क्वेश्चन का आंसर में मतलब था, मुझे पैराग्राफ में क्या दिया है उसमें कोई मतलब नहीं था. ठीक है, मुझे लगता था कि मैंने पैराग्राफ पढ़ लिया, मेरे दिमाग में इमेजिनेशन बन गई है, मैं आंसर दे पाऊंगा. दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग. In fact, all of us were thinking in that way. Until and unless you learn a right way, a right approach to do this. दोस्तों, ProTalent believes that you need a proper structure for logical reasoning. We have spent a lot of time, you can say, with our students, training them on this logical reasoning. We continue doing it. Yes or no? In case you want to take this logical reasoning course separately, that's also possible, wherein we are going to give you so much in-depth understanding about this logic part. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. ठीक है, you need complete focus and right understanding of LR. दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा. You need right understanding. आप अपने आप नहीं कर पाओगे. यू में सर किताब बता दीजिए ना, we will do it. My dear students, there is no book in the market in India which will train you for this logic. No books are there. ठीक है दोस्तों, there are obviously some notes, ठीक है, which we have developed. ProTalent का एक मजेदार सा conceptual book available है. ठीक है, वो conceptual book आपको परचेज करना है, you can purchase it separately. वेरी इंपॉर्टेंट वन, बहुत मजेदार है. ठीक है, बहुत चैलेंजिंग है. आपको उसके अंदर जो एक्सरसाइजेस देके रखी है वो करने में बहुत टाइम लगेगा, 3-3, 4-4 बार करनी पड़ेगी. बट बिलीव मी, आपके
फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इट इज अ मस्ट बुक। 2020 में thousands ऑफ स्टूडेंट्स टुक इट, ठीक है। 2021 अप टू यू, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सुनो। एंड दोस्तों, आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है, जो हम आर एस अग्रवाल या यू कैन से ऐसी जो भी 2-3 किताबें मार्केट में अवेलेबल है, वहां से अगर हम करेंगे, दैट इज नॉट डन, क्योंकि उन किताबों में लॉजिक नहीं बताया है, उन किताबों में क्वेश्चंस दे दी है, उसका आंसर दिया है, बट दैट्स नॉट एप्रोप्रिएट। ओके, यू नीड राइट गाइडेंस, समझो। और उसके अलावा अगर आप क्लैट के अलावा कोई और लीगल रीजनिंग की एग्जाम देना चाहते हो, मतलब लॉ की एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, लाइक MHCT, okay, or let's say symbiosis, possibly you will require some learning of non-verbal reasoning like coding, decoding, yes, linear arrangement, ठीक है, circular arrangement, alphabet series, syllogism, direction sense test, blood relationship test, alphabet series test, lot of such kind of thing will be there, yes or no, which you may require for all non-CLAT examination, ठीक है। So that is what you have to keep in mind. So in a way, ठीक है, let me tell you how do you need to prepare. There is one preparation which is of practice, ठीक है। Other preparation is developing your conceptual mindset, ठीक है। दोस्तों, ये conceptual mindset को मैं एक और शब्द में बोलना चाहूंगा, I need to put it in a way that I need to develop your psychological thought process. दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास इसकी भरपूर कमी है। एक तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ये रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। You need to slow down your thought processes, yes or no, you have to read every word, you have to understand every word has some connection, this is very important, okay, this is very crucial, बराबर है, ये बहुत जरूरी बन जाता है। साथ में ठीक है, आपका अलर्टनेस इंप्रूव करना है, अलर्टनेस अबाउट लैंग्वेज एज वेल, ओके। हम बहुत गलतियां करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से व्हेन आई टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर आइलैंड, उनके लोगों के बिहेवियर के बारे में मैं बात करूं, ठीक है, कि इन अ पर्टिकुलर आइलैंड पीपल ड्रिंक अ लॉट एंड दे बीट देयर वाइव्स, ठीक है। व्हेन आई से पीपल ड्रिंक अ लॉट एंड दे बीट देयर वाइव्स, ठीक है, मैंने दो अलग अलग फैक्टर्स को एंड के साथ ज्वाइन कर दिया। दैट डज नॉट मीन दैट drinking is a cause for beating wives. That is not connection. No connection. There is no connection. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि लोग बहुत दारू पीते हैं, ठीक है, ओके, सॉरी, वो लोग अपनी वाइफ को, उनके कल्चर में अपनी वाइफ को बीट करना इज प्रीटी एक्सेप्टेबल, वो बीट करते हैं और उसके बाद, ठीक है, दे फील गिल्टी एंड देयरफॉर दे ड्रिंक अ लॉट, तो वो बीवी को मारते इसकी वजह से दारू पीते, ठीक है, जरूरी नहीं कि दारू पीते इसलिए मारते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है दोस्तों, ये लैंग्वेज का अलर्टनेस आपको चाहिए, है ना, और लॉजिक के ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, हाउ डिडक्टिव रीजनिंग इज डिफरेंट देन इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। आपने इस तरीके से ट्रेन नहीं किया है अपने आप को, प्लीज ये ध्यान रखिए, फोकस करिए। हाँ, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई नीड टू टेल यू, देयर आर नो बुक्स in the market that will help you, at least for India. लॉजिक नाम की चीज के लिए कोर्स ही नहीं है। इफ यू गो टू coursera.com, ठीक है, you go to edX or you go to Udemy, you will find universities are giving courses on logic, ठीक है। 11th-12th में मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट के अंदर लॉजिक का एक चैप्टर है, ठीक है, बाकी है ही नहीं। इंडिया में लॉजिक पढ़ाने का कोई कल्चर ही नहीं है, ठीक है। दैट इज सो बैड, बट दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि दोस्त ऐसे नहीं होगा, ठीक है। यू नीड हु विल ट्रेन यू, समवन टू ट्रेन यू इन लॉजिक, ओके। देयर आर नो बुक्स, यस और नो, ठीक है, यस, बट देयर आर गुड नोट्स अवेलेबल, यस और नो, प्लीज टेक इट, है ना। ProTalent के नोट्स है, प्लीज उसको आप ले लीजिए। मैंने यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन में, वो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है, आप वहां से ले सकते हैं, यस और नो। यू मस्ट प्रैक्टिस। एक बार आपने कंसेप्ट डेवलप कर दिए, यू नीड प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस कैसे दोस्तों, ठीक है। विल यू बी डूइंग फ्रॉम व्हाट मटेरियल दोस्तों, यू नीड
लॉजिक, ठीक है, you need logical reasoning of a particular level, yes or no? So that means you need the practice material not of RS Agarwal, ठीक है, और you can say whatever that you can say MC, you can say पंड्या की जो भी किताब है वो, मतलब that's what we don't need, ठीक है, उससे काम नहीं होगा. हाँ, you can take this study material, ठीक है, that will help you. So I strongly suggest visit our website called courses.protalentdigital.com, ठीक है, where you will find CLAT 2021 course. उसके अंदर you go in it, there are various courses available. There is a special logical reasoning course available. You can purchase it. It will give you a wonderful preparation part, ठीक है, believe me, बड़ा फायदा करेगा. यस, ठीक है, आई होप आई गेव यू अ डायरेक्शन कि क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या सोर्सेस है, क्या चीजों में बदलाव लाना है, ठीक है. दिस इज व्हाट आई शेयर्ड विथ यू. आई होप यू मस्ट बी लाइकिंग इट. अगर आपको ये पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.